Hi guys, good evening everyone. So welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Juhi Sharma, and we will be starting with the new topic today. Actually, this is a much awaited topic जिसके लिए आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा request करा था कि मैम please ये topic पे लाइए, the special series obviously. So continuing to the special series of the topics such as the Tokyo Olympics, Paralympics. So continuing to that, let's start, or let's just get into the Nobel Prizes. Now you all must be aware that Nobel Prizes abhi announced हुए थे कुछ time पहले, right? In the month of September, Nobel Prizes were announced. But yes, we got a little late to hop onto this trend, but nonetheless, I welcome all of you. Good evening, everybody. Good evening, guys. I hope all of you are doing well. And yes, now we'll be doing, or we'll be discussing about the Nobel Prizes. So I'll just explain you the flow of the session. Basically, we will be initially doing the introduction part, the history of Nobel Prizes, and then moving further, we'll be discussing about the 2021 recipients of the Nobel Prizes, right? So without wasting much of your time, let's quickly get into the first slide wherein we discuss about the history of Nobel Prizes. कि actually Nobel Prizes देने का शुरू कहाँ से हुआ, right? So before that, I want all of you to quickly give this video a big thumbs up. Just hit that like button so that whenever it basically motivates us. That is the basic point of us making you guys hitting that like button. Also subscribe to PRATHAM Test Prep's channel if you haven't done already. And yes, now see that what was the history of Nobel Prizes. Basically, हमने Nobel Prizes के बारे में बहुत बारी सुना है कि हर साल आपके Nobel Prizes जो है वो announce होते हैं, Nobel Prize laureates होते हैं, recipients होते हैं, but actually ये सारा शुरू कहाँ से हुआ, right? So there was this person called Alfred Nobel. He was a businessman, he was a philanthropist, he was like a well-to-do person, and Alfred Nobel जो थे, उन्होंने actually ये Nobel Prizes का जो था वो start किया. Now, start कहाँ से हुआ? Alfred Nobel की जो will थी, right? आपने देखा होगा कि जो भी कुछ ऐसे businessmen होते हैं, कुछ होते हैं, they have this will, right? तो Alfred Nobel जो थे, he was a philanthropist and everything, so he had this will wherein he said कि जो भी उनके business का major chunk होगा या जो largest share होगा of his business, वो जाएगा एक series of awards के लिए जिसका नाम उन्होंने दिया Nobel Prizes, right? So according to him, these Nobel Prizes were given in 5 categories in the year 1895. According to his will, जो उन्होंने बोला था that majority of the chunk जो था उनके business का, right, of the profit he was making, it would go to the Nobel Prize का पूरे उन्होंने series निकाला, series of awards, and वहां पर उन्होंने start करा the categories. There were 5 categories in which he started this Nobel Prize. So firstly, it was physics. उन्होंने बोला Nobel Prize in chemistry, physiology or medicine. Then it was literature, and then it was peace. So in these 5 categories, the Nobel Prizes were given according to his last will, right? अब हुआ क्या? काफी टाइम बाद ऐसा देखा गया कि जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, राइट, द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक इज स्वेरिट्स रिक्सबैंक. उस बैंक ने क्या किया, एक स्वेरिट्स रिक्सबैंक प्राइज जो था वो इंट्रोड्यूस करा, दैट वाज बेसिकली गिवन इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स. सो इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, इकोनॉमिक साइंसेस में भी आपका नोबेल प्राइज बाद में दिया जाने लगा. एंड माइंड यू गाइस, DU जैट में हमारा इस बार 2021 DU जैट में नोबेल प्राइजेस इन इकोनॉमिक साइंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. वो क्या क्वेश्चन था, आई विल बी टेलिंग यू in the later part of the slides. So just make sure to stick to it to the end so that आपको पता हो कि वो question क्या था and what was the correct answer of that, right? तो हमें एक चीज समझ आई कि 1895 में जो अल्फ्रेड नोबेल का जो will था, the last will, उसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज को बोला था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन.
लिटरेचर एंड पीस। लेकिन in 1968 में व्हाट स्टार्टेड, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में एक और कैटेगरी में नोबेल प्राइज जो था वो इंट्रोड्यूस करा, दैट वाज इकोनॉमिक साइंसेस। एंड टोटल at present Nobel prizes is given for 6 categories, right? At present there are 6 categories in which Nobel prize is given. Okay, now moving further, we have that what is actually this Nobel prize. अब Nobel prize basically क्या है, आपने देखा है कि जितने भी वर्ल्ड में, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी आपके इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, let's say from the physics field or from the chemistry field or medicine field or science or for peace or literature or economic sciences, right, इन सबको ये जो आपका prestigious award है वो आपको दिया जाता है। बट इसके लिए the selection process is not easy, right? There is this very rigorous selection process about which I'll be telling you in the further slides. But Nobel prizes जो है, it is the most prestigious award which is given for the intellectual achievements across the world and in total 6 categories. Okay, initially start कितने categories में हुआ था? Initially it got started for 5 categories, but बाद में 1968 में got started into the 6th category, that is economic science, right? Now एक और चीज में let me tell you that as I've already mentioned, these are the Nobel prizes, right? These are annual prizes. तो क्या होता है आपका कि ये आपका एनुअली दिया जाता है, एंड यूजुअली दीज नोबेल प्राइजेस जो है, दीज आर गिवन उन लोगों को जिन्होंने who has conferred the greatest benefit on what? On mankind, right? So नोबेल जो थे, अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने ये पूरा प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करके भेजा था कि जिन्होंने पूरा का पूरा 1 साल बहुत अच्छे से अपना पूरा, फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स है तो वहां पे उन्होंने मैनकाइंड के लिए वर्क करा है, केमिस्ट्री है तो उसमें करा है, सो उन लोगों को दे कैन गेट नॉमिनेटेड और दे कैन somebody can propose their name for what? For the Nobel prizes, right? अब आपने देखा है नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, और नोबेल प्राइजेस में ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्राइज मिलता है, उनको एक सर्टिफिकेट साइटेशन भी मिलता है, एक मेडल भी मिलता है, एंड एक कैश अमाउंट भी मिलता है, right? About all these things I will be telling you in the further slides. So basically you need to know कि पहली बार नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ था. So for the very first time ये जो नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो हुए थे on the 5th anniversary of Alfred Nobel, right? Alfred Nobel की 5th डेथ एनिवर्सरी पर सबसे पहली बार नोबेल प्राइजेस got distributed. Okay, what was the date? It was December 10, 1901. ये क्वेश्चन भी आपका मिसलेनियस जे का क्वेश्चन है, that on in which year the first Nobel prizes got distributed. So the year is 1901. First Nobel prizes got distributed in the year 1901. क्या occasion था? It was the death anniversary or the 5th death anniversary of Alfred Nobel, right? Now, as I have already told you, कि economic sciences में Nobel Prize got introduced in which year? It got introduced or it got established in the year 1968 by Central Bank of Sweden, and उसके succeeding year में obviously Nobel Prize मिलेगा. तो कौन से year में मिला? In the year 1969. अगर question में आता है that in which year the Nobel Prize in Economic Sciences got introduced or established, then you have to mark 1968, wherein if they ask you that in which year the first Nobel Prize was awarded in economic sciences, the answer would be 1969, right? Question comes कि Alfred Nobel का डेथ हुआ, उसके 5 साल बाद हमने क्या किया? हमने नोबेल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा, राइट? बट ये सारी चीजें जो है नोबेल प्राइजेस कौन ध्यान में रखता है, कौन करवाता है, who administers that, इसका पूरा किसका जिम्मे किसका हाथ में है? इट इज इन द हैंड्स ऑफ नोबेल फाउंडेशन, राइट? सो ये जो नोबेल फाउंडेशन है, इट कीप्स इनटू कंसीडरेशन Alfred Nobel's will and they administers the fund, and in this manner आपका क्या है? आपका नोबेल फाउंडेशन जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के जो प्राइजेस हैं, द नोबेल अवार्ड्स, वो आपके दिए जाते हैं. Now one more thing, जो आपका नोबेल प्राइजेस का जो कैश अवार्ड है, right? The cash award is given on the basis of what funds or what is the profit of Nobel Foundation. तो ऐसा नहीं है कि हर साल को सेम होगा या ऐसा.
The thing is that it completely depends upon the foundation that in so and so year how much cash award is they willing to give, right? एंड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत ही ज्यादा क्लियरली अपने विल में, जो उनका लास्ट विल था, लास्ट टेस्टामेंट था, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि नोबेल प्राइजेस जो आपके दिए जाएंगे, दोस ही हैड स्टिपुलेटेड द 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके 3 स्वेडिश इंस्टीट्यूशन थे और एक आपका नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन था, दैट these institutions should be awarding the prizes, right? So these are some of the important facts related to Nobel prizes. Okay, now moving further, we have the selection process of the awards. यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई भी बंदा सेल्फ नॉमिनेशन नहीं दे सकता, राइट? You have to keep in mind that self nomination is not allowed. Either the name has to be proposed by someone or it has to be nominated by someone. Self nominees are not nominated, right? So simple सी चीज है, आपकी winners आपके अनाउंस होते हैं अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन ऑटम के टाइम से ही, अर्ली ऑटम, व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली ऑटम? ऑटम के टाइम से ही आपका क्या है, ये पूरा प्रोसेस जो है पिछले साल के ऑटम के टाइम से। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं 2021 में, तो 2022 में नोबेल प्राइजेस किसको दिया जाएगा, उनका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका इसी टाइम से, द ड्यूरेशन इन व्हिच वी आर राइट नाउ, तब से शुरू हो जाता है, राइट? सो आपका जो नोबेल प्राइज है, 6,000 individuals or more than that, they propose their name, they nominate candidates for the prizes, and कुछ 1000 people submit the nomination for each prize. यहाँ पे each prize की जो बात हो रही है, तो we are meaning or we mean the category. So in total हमारा more than 6,000 individuals they propose their name for the Nobel prizes, but जो आपका कैटेगरी वाइज है तो 6 कैटेगरीज है आपकी, तो ऑन एन एवरेज आपका 1000 people they submit their nomination for each prize for each category, right? So ये आपका है नॉमिनेशन आता है, but the nominees they range from around 100 to 250. Although this number is not important, we are just giving you an idea कि कितने सारे लोगों का नाम और the name gets proposed or nominated for the Nobel Prize. Okay? Now इसके बाद ऐसा नहीं है कि यहीं पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया या आप मुंह जाके किसी को भी नॉमिनेट कर दोगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो नोबेल लॉरेट्स हैं उनको स्कॉलर्स होना चाहिए किसी न किसी फील्ड में, बी इट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, या फिर वो किसी लर्नेड यूनिवर्सिटी या फिर किसी लर्नेड एकेडमिशियंस होने चाहिए टू गेट द नोबेल प्राइजेस, है ना? तो नोबेल लॉरेट बनने के लिए ये सारी चीजें आर रिक्वायर्ड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल्फ नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आपको किसी ना किसी को नाम नॉमिनेट करना है, प्रपोज करना है, सेल्फ नॉमिनेशन गेट डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली, राइट? अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग द नोबेल प्राइजेस, और वो क्या है कि नोबेल प्राइजेस हमेशा किसी ना किसी पीपल या इंडिविजुअल को मिलेगा, एक्सेप्ट the peace prize. Now this is very very important, and if you are preparing for your entrances from last 1 year, or if you know the 2020 Nobel Prize winners, therein you will know that the 2020 Nobel Peace Prize was given to whom? It was given to World Food Program, right? It was given to World Food Program. So World Food Program, the headquarters of World Food Program is in Italy, that's in Rome, right? So simple सा आपका है कि जो आपका Peace Prize है वो किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। It is not necessary कि हर बार ही किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। It can be given or conferred upon to any institution if required, not mandatory, but जो बाकी prizes है वो सारे किस किस को दिए जाएंगे? To obviously the individuals, right? Now, moving further, let's see कि प्राइज अमाउंट क्या है, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, कितने लोग शेयर करते हैं नोबेल प्राइजेस। So let's quickly go through that. So as I've already told you, अगर कोई नोबेल प्राइज के मिलता है या नोबेल लॉरेट होता है तो उसको क्या मिल रहा है? They give them a gold medal, firstly. Secondly, they give them a diploma which bears a citation, जिसे पूरा लिखा होता है that so and so person has been awarded with so and so Nobel Prize in this category for this year, and एक उनको सम ऑफ मनी मिलता है या फिर एक उनको कैश अवार्ड मिलता है,
एंड ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में नोबेल फाउंडेशन का क्या इनकम रहा. इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दैट. इट इज नॉट सेम एवरी ईयर, राइट? नाउ सेकेंड थिंग यू नीड टू नो दैट Nobel prizes can be shared with not more than 3 people. Okay, not more than 3 people can share a Nobel Prize. या तो एक ही बंदे को Nobel Prize मिलेगा, right? Or it can be divided equally between 2 people, half and half, or it can be shared with 3 people only. तो 1/3 portion जो है वो मिलेगा. It can be shared by not more than 3 people. तो केवल 3 लोग ही Nobel Prize share कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग share नहीं कर सकते, राइट? इनका क्लॉज ये भी है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में ऐसा है कि किसी कैटेगरी के लिए देयर इज नो वर्दी पर्सन और पीस प्राइज में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, राइट? कोई वर्दी पर्सन या इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका नोबेल प्राइजेस रोक भी दिया जाता है या फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं भी दिया जाता, राइट? So that is one thing कि अगर कोई वर्दी कैंडिडेट नहीं है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड नहीं भी किया जाता. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर साल 6 की 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज आपका दिया जाएगा. ओके, एक सिनारियो ये. द सेकंड सिनारियो इज कि बाय चांस अगर सिचुएशन करेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, जिस ड्यूरेशन में आपका नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, रीजन भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया. एक सेकेंडली जो भी इंफॉर्मेशन जो गैदर हुई भी, राइट? पहली बात तो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाए, एंड अगर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई भी उससे क्या हुआ, कोई डिसीजन नहीं मिल पाया. सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 नोबेल प्राइजेस नहीं भी दिए गए थे, राइट? सो दो चीजें हैं, अगर कोई वर्दी कैंडिडेट नहीं है तो भी आपका नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर वर्ल्ड सिचुएशन ऐसा है कि नोबेल प्राइज का आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर the decision has not been made, so the Nobel prizes can be withheld or they are not even awarded. Okay, moving further, we have some important facts about the Nobel prizes. शुरू कौन सी ईयर में हुआ था? As I have already told you, in the year 1901 at the time of the 5th death anniversary of Alfred Nobel. एंड अभी हम हैं 2021 में, जिसमें आपके लेटेस्ट नोबेल प्राइजेस जो है वो दिए गए हैं. ओके, सो ये जो नोबेल प्राइजेस हैं एंड इकोनॉमिक साइंसेज में भी प्राइजेस जो आपका 1968 में शुरू हुआ, उन सबको मिलाकर टोटल 609 times the Nobel Prize has been awarded. Okay, so आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि since the 1901 जब तक आपके नोबेल प्राइज नहीं अवार्ड हुए थे कुछ टाइम तक, टोटल नंबर वाज 49. As I've already told you, वर्ल्ड वॉर 1 and 2 के टाइम पर आपका नोबेल प्राइजेस जो थे वो नहीं अवार्ड हुए थे. कब? Those were 49 times when the Nobel prizes were not being awarded since 1901. Okay, 609 times award हुए हैं, 49 times due to some situations. For example, आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था from 1914 to 1918. एंड 39 से 45 तक आपका वर्ल्ड वॉर 2 चला था. तो उन सबको कंबाइन करके आपका 49 टाइम्स आपके नोबेल प्राइजेस नहीं भी दिए गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चंक वाज बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कम्स कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट कौन है? सो मलाला यूसुफजई, की शी इज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट, एंड अगर ओल्डेस्ट में आपका आएगा नोबेल प्राइज लॉरेट तो इज जॉन बी गुडेनफ. So Malala Yousafzai is the youngest Nobel Prize laureate and John B. Goodenough is the oldest Nobel Prize laureate. Okay. Now the question is कि 1901 से 2021 तक economic sciences में, hi Ishika, economic sciences में, yes पाकिस्तानी activist, economic sciences में कितनी बारी Nobel Prize दिया हुआ है? इसमें आपका दिया गया है 58 times to the women, है ना? जब हम Nobel Prize की बात कर रहे हैं and Nobel Prize plus economic sciences में कितनी बार दिया गया है to women? That is 58 times. So these are some of the important facts and figures regarding the Nobel Prizes. Okay. Now we have, अब ऐसा भी क्या सिनारियो है कि किसी का नाम प्रपोज हुआ, कोई नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज में, बट वो अपना जो अवार्ड है उसको डिक्लाइन कर दे, वो ना ले, राइट? दो केसेस होते हैं, या तो बंदे ने खुद ही डिक्लाइन कर दिया
या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती फोर्सफुली वापस करवा दिया अवार्ड, राइट? सो दीज आर द टू केस सिनेरियोज वेयरइन द नोबेल प्राइज हैज बीन डिक्लाइन। तो 2 बार ऐसा हुआ था जब आपका नोबेल प्राइज डिक्लाइन कर दिया था। पहले जो बंदे हैं वो है जीन पॉल स्टार्ट, ही डिक्लाइंड द नोबेल प्राइज, and second Lee Duke-Do, he declined the Nobel Prize. They have their own reasons and we'll be getting into these reasons. Jean Paul Start को Nobel Prize मिला था दिया 1964 in the category literature, but he was in that phase जहां पर वो जो भी उनको awards मिल रहे थे, जो भी उनको official honors मिल रहे थे, he was in the phase of consistently declining those honors. ठीक है, जो भी उनको अवार्ड्स मिल रहे थे, ऑनर्स दिए जा रहे थे, वो सबको डिक्लाइन करे जा रहे थे, एंड नोबेल प्राइज वाज वन ऑफ दैट। ओके, सो जीन पॉल स्टार्ट ये था। ली ड्यूक-डो got awarded with the Nobel Prize in the year 1973 for the peace category। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि वियतनाम में काफी ज्यादा वॉर इश्यूज हो रहे थे, पेरिस वियतनाम में काफी ज्यादा वॉर इश्यूज हो रहे थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए he felt that he is not actually in the position of accepting a Nobel Peace Prize because he considered the situation in Vietnam as one of the reasons. Although Lee Duke-Do को ये आपका half and half prize मिला था, he was jointly awarded with US Secretary of State Henry Kissinger, right? But Lee Duke-Do ने क्या किया, अपना जो Nobel Prize है he declined. Why? Because जो वियतनाम में वॉर लाइक सिचुएशन से, एंड ही थिंक दैट और ही थॉट दैट ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट दैट अवार्ड। ठीक, दोनों लोगों को किस चीज के लिए मिला था? फॉर द वियतनाम पीस अकॉर्ड, राइट? सो दैट वियतनाम में जो चीजें चल रही थी, वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा था, सो ब्रिंगिंग पीस टू दैट, रिस्टोरिंग पीस इन द कंट्री, तो उस चीज के लिए दोनों को मिला था। बट ली डू ही डिक्लाइंड हिज अवार्ड, राइट? नाउ moving further to people who were forced to decline the Nobel Prize award. Yes, ऐसा भी होता है कि forcefully लोगों को decline कर दिया जाता है, कि forcefully लोग जो है उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं, you will not be accepting the award. तो ऐसा जो हुआ था, 4 Nobel laureates they have been forced, right, कि वो अपना Nobel Prize जो है वो त्याग दें, जैसे कहते हैं ना कि आप बस दे दो, आप फोर्स कर दे कि भाई आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। जिसमें से 3 जो थे उनको फोर्स किया था हिटलर ने, राइट? और वो 3 लोग कौन थे? He was, the people were Richard Kuhn, Adolf Buchenwald and Bernard Joma, right? So these were you can say these people were restricted to accept the Nobel Prize, right? Later on उनको मेडल मिल गया था, उनको वो जो डिप्लोमा है विद साइटेशन वो मिल गया था, बट उनको कैश अवार्ड नहीं मिला था। They didn't got the prize amount, right? उसके बाद the 4th person who declined the Nobel Prize, there are 4 people who declined the Nobel Prize. So the 4th person who declined the Nobel Prize was in the year 1958, and the name is Boris Pasternak. He declined, he got it in the field of literature. Initially उन्होंने accept कर दिया था, लेकिन जो उनकी native country है, that is Soviet Union, वहां पे लोगों ने उनको force करा, he was coerced by the authorities to just decline the prize, so he has to do that because the country demanded for that. So these were the 4 people who actually declined the Nobel Prize, right? Forcefully they declined, and जो 2 लोगों के नाम मैंने आपको बताए थे, उन्होंने अपनी इच्छा से नोबेल प्राइज जो था वो डिक्लाइन करा था। Okay, now let's move on to the Nobel Prize award ceremonies. ये सेरेमनी होती कहाँ है? तो दिसंबर 1901 में जब आपका पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, on the birth anniversary of on the death anniversary, the 5th death anniversary of Alfred Nobel, तो उस टाइम पर आपका कहाँ पर हुआ था? It held in Stockholm, Christiania, which is now Oslo, right? अब जो आपकी है till 1925 आपकी जो नोबेल प्राइज जो है उसकी सेरेमनी स्टॉकहोम में ही होती है, ओल्ड रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, 1901 से 25 तक वहां पर होती थी। लेकिन अगर आप एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इफ आई टेल यू प्रेजेंटली वेयर इज द नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी बीइंग कंडक्टेड, ये होता है आपका स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल में, ऑल्दो देयर हैव बीन फ्यू एक्सेप्शंस फॉर दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन conducted at the Stockholm concert hall, right? Now moving further to the Nobel Prize winners of 2021, here I'll be telling you
the names of the people, right? Instruments of category who got the Nobel Prize, and also the discovery that for what reason they got the Nobel Prizes. So physiology or medicine में आपका 2 people got Nobel Prizes, and the names are David Julius and Ardem Patapoutian. Okay, David Julius and Ardem Patapoutian, they got the Nobel Prizes in the field of physiology or medicine. And उनका क्या था आपका discovery? The discovery of receptors for the temperature and touch. आपको काफी सारे अपने हिसाब से you can devise your own mnemonics to learn the names of these Nobel Prize winners. आप अपने खुद से names है वो आप अपने खुद से mnemonics जो है वो devise कर सकते हैं, right? And if you are a Pratham student and if you have attended one of my class of current affairs, there I have told you the mnemonics too कि इसके लिए क्या है. I clearly don't remember कि वो क्या specifically class थी, but yes, I have shared the mnemonics in the classes too. Okay, so yes, that is one thing. Now, again, just going into the depth of what was the discovery, it was basically that their research activity in turn led to the rapid increase in understanding of how our nervous system sense heat, cold, and mechanical stimuli. हमारा जो nervous system है, the human nervous system, how it senses touch, how it senses temperature. Basically, the discovery was about that. Now, in the physics category, 3 people, 1/3 of the people, 1/3 का part मिला, they was awarded with the Nobel Prize. 3 scientists जो थे, and the names are Shikuru Manabe, right? He got the 1/3 share. Then Klaus Hasselmann was the another person, and next was Giorgio Parisi, right? So these 3 people got Nobel Prizes in physics for the discovery of Earth's climate and how humanity it influences. Moving further, we have the Nobel Prizes in chemistry. Again, 2 people got the Nobel Prizes. The names are Benjamin List and W.C. Macmillan, right? These are the 2 people who got the Nobel Prize in the field of chemistry. And why they got it? What was the discovery? The discovery was because they developed a new tool जिससे आपका molecules work और जो आपका pharmaceutical research है, ये सारी चीजें जो हैं उस पर काम किया जा सके. Right, and these are actually very, very essential, very, very indispensable for the industries, and these are very crucial for the research. So Benjamin List and David W.C. Macmillan were the 2 people who got the Nobel Prize in chemistry. Right, now then we have literature. Literature में केवल single बंदे को आपका Nobel Prize मिला, and his name was Abdul Razak Gurna, and he got the Nobel Prize in the field of literature. Why? Because of his uncompromising and compassionate penetration of the effect on colonialism and the fate of refugee in the gulf between cultures and continents. I know, बहुत बड़ा है, but many a times आपके पास ना सिर्फ question आता है related to the people or the person who got the award, right? Discoveries पे बहुत ही rarely आता है. So that is one thing. He was someone who was born in Tanzania, but now he lives in Britain. And ये पहले African है who was considered the पहले African to win this literature award, right, in world literature for almost 2 decades. So ये एक important pointer है that he was the first African to win the award, considered the most prestigious in the world literature in almost 2 decades. 2 decades he was the first African to win this award. So Nobel Prize in the field of literature, Abdul Razak Gurna for you guys. Moving further, we have the category peace. Unlike 2021, as I've already mentioned you, unlike 2020, the Nobel Prize in peace was given to World Food Program, as I have already told you. But this year, it was given to 2 people, journalist Marin Ressa, she is from Philippines, and Dimitri A. Murata. Right, so these people, they got the Nobel Prize, right, for their freedom for expression in Philippines and Russia. ठीक है, तो press freedom के लिए basically we know that press का उतना ज़्यादा freedom नहीं है. If I tell you about in India में भी नहीं है, and in fact rest of the world में भी press freedom उतना ज़्यादा नहीं है. So that is the reason why they work for the press freedom. These are the people who are the journalists, and they got the Nobel Peace Prize to safeguard the freedom of expression
and it is described as a precondition for democracy and lasting peace. इन दोनों लोगों को मिला था. Maria Ressa, she's from Philippines, and Dmitry Muratov, he's from Russia, right? So these people, they got the Nobel Peace Prize. And lastly, we have the Nobel Prize in Economic Sciences, and 3 people got it. It was David Card, it was Joshua D. Angres, and it was Guido Ambels, right? These 3 people got the Nobel Prizes. And yes, उनका आपका जो Nobel Prize है, these are from states like आपके US से हैं, ठीक है? The winners are based in US. आपका it's not necessary to know actually कि right now they are currently based where, but इन लोगों को मिला था the economic sciences में Nobel Prizes, right? So these were the 2021 Nobel Prize winners for you with the history and everything. Now moving on to the last slide, let's quickly talk about the Nobel laureates of India. Okay, so Nobel laureates of India. Now this is for you guys to count that how many Nobel laureates of India were there, right? India se kitne Nobel laureates hai? When I mean India se, that means they are Indian origin or Indian born, right? Indian born वो लोग हैं, ठीक है? Later on उनका citizenship change हो सकता है, but they were born in India. So let's quickly go through that. Ronald Ross in 1902 won the Nobel Prize in Medicine. He was born in India. Then we have Rudyard Kipling in literature in the year 1907. Then we have the very famous Rabindranath Tagore Nobel Prize in literature in the year 1913. Then we have C.V. Raman in physics, Hargobind Khurana in medicine, Mother Teresa again in Peace Prize, Subramaniam Chandrasekhar in peace, 14th Dalai Lama for peace, Amartya Sen for economic sciences in the year 1998. अगर आप economics पढ़ रहे हैं तो आप अमर्त्य सेन के बारे में भी आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, the theories of Amartya Sen in development economics. Then we have Venkataram Ramakrishnan in the field of chemistry, Kailash Satyarthi Nobel Peace Prize, who is a social activist, and then we have Abhijit Banerjee, who is an economist, and he won the Nobel Prize in economic sciences in the year 2019. Now, coming back to the question which I put up to you in the very beginning of the session, actually, DU-JAT 2021 में आपका एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया से अभी तक नोबेल प्राइजेस इन इकोनॉमिक साइंसेस कितने लोगों को मिला है? How many people from India won the Nobel Prizes in economic sciences? The answer were 2 people. They won the Nobel Prizes in economic sciences. कौन थे? Amartya Sen in the year 1998, and then we have Abhijit Banerjee in the year 2019. Abhijit Banerjee was the last person to receive a Nobel Prize. Latest, if I tell you, he was the latest person to receive a Nobel Prize, who was from India. Now with this, let's wind it up. Thank you so much for being with us, for tuning in, and do subscribe to Pratham Test Prep's channel. Give this video a big thumbs up. And yes, we'll be meeting you guys super soon on Tuesday with a very new topic. Till then, take care, stay safe, bye-bye.